जी फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम कमीशन ऑफ रेल सेफ्टी करने जा रहे हैं। देखिए व्हाई न्यूज़ में कहते हैं देखिए द कमीशन ऑफ रेल सेफ्टी पार्ट ऑफ द कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी विल इन्वेस्टिगेट द ट्रेन एक्सीडेंट की वजह से में भी ट्रेन ट्रेजेडी हुआ जो एक्सीडेंट हुआ इसमें भी इंक्वायरी किया। देखिए कि इसका काम क्या है देखो। अबाउट द कमीशन ऑफ रेल सेफ्टी द कमीशन ऑफ रेल सेफ्टी इज a government body that acts as the rail safety authority in the country। तो रेल सेफ्टी है तो वो अथॉरिटी के हिसाब से काम करेगी उसमें बोला है। इसका हेडक्वार्टर देखिए लखनऊ में है। इसका फंक्शन देखिए it deal with the matter related to safety of rail travels in operation apart from the inspection inspectorial उसको investigatory and advisory function उसको advisory function है सर। This function of CRS are laid down in the Rail Act 1989 उसको पावर मिला है 1989 रेल एक्ट है। देखिए इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल क्या क्या है देखिए। CRS comes under the administrative control of the Ministry of Civil Aviation। याद है Ministry of Civil Aviation क्या होता है। It does not report to the Ministry of Railway तो ये Ministry of Railway रिपोर्ट नहीं करता है। इस कंट्रोल में किस कंट्रोल में आता है याद है Ministry of Civil Aviation। The reason for its inclusion under the Ministry of Civil Aviation is to keep it insulated from the influence of the country railway establishment।